हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक हो, सेफ हो और घर पे हो। जैसे कि हम सब जानते हैं ईद आने वाली है, सो मैंने डिसाइड किया कि मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं जो ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं उनके लिए एक स्पेशल लुक क्रिएट करूं और स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि मैंने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। सो आज के वीडियो में मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ। बट सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। ऑल्सो मैंने एक और मेकअप लुक किया है फॉर ईद एंड मैंने वो शॉर्ट्स में अपलोड किया है, तो मेक श्योर कीजिए आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं, ताकि आपको ऑप्शन मिल सके आपको ये लुक क्रिएट करना है कि वो लुक क्रिएट करना है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। So first I'll be using LA Girl Pro Concealer shade Medium Beige to prime my eyes. So what I usually prefer is to do my eye makeup first and then my base makeup. मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले बेस करना है फिर आइज करना है, या फिर पहले आइज करना है फिर बेस। इट्स अप टू यू, वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। आई ऑलवेज फील इट्स बेटर टू डू आइज, क्योंकि अगर कोई भी फॉल आउट हो और कुछ भी हो तो आप अगर बेस ऑलरेडी कर चुके होगे तो आपका बेस ख़राब हो सकता है। सो बेटर होता है कि आप अपनी आइज पहले करें और फिर बेस करें। हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपका स्पॉन्ज डैम्प हो। अगर ये डैम्प नहीं होगा तो बहुत ड्राई होगा और ब्लेंडिंग इजीली नहीं होगा। सो डैम्प स्पॉन्ज से ही डैप कीजिए, इससे ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सो टुडे आई विल बी यूजिंग हुडा ब्यूटी टोपेज ऑब्सेशन। These are the colors. थोड़ा सा वार्म ब्राउन है ये। सो मैंने क्रीज पे और साइड में ये कलर को ब्लेंड कर दिया। अब इसे थोड़ा सा और डार्क बनाने के लिए मैं ये डार्कर शेड यूज़ करूँगी। थोड़ा सा लेके ऐसे सिर्फ अपने क्रीज पे ब्लेंड करना है। नेक्स्ट हम ये ऑरेंज शेड लेंगे और इससे ब्लेंडिंग करेंगे। सो जो हमने क्रीज पे ये डार्कर शेड किया है इसके ऊपर हम ऑरेंज को ब्लेंड करेंगे यहाँ पर। सिर्फ एक स्लाइट ऑरेंज का हिंट देना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो क्रीज है उसे हमें कंसील करना है ताकि एक प्रॉपर कट क्रीज इफेक्ट क्रिएट कर सके। सो मैं थोड़ा सा कंसीलर लूँगी और ब्रश से उसे क्रीज पर लगा दूँगी, सॉरी क्रीज के नीचे, कट क्रीज इफेक्ट देने। आपको सिर्फ अपनी जो ओरिजिनल क्रीज है उसे फॉलो मतलब अब मेरी जो आँखें है वो थोड़ी सी छोटी है, तो मैं जो अपनी ओरिजिनल क्रीज लाइन है जो ये है उसकी थोड़ा ऊपर जा रही हूँ। बट अगर आपकी आँखें बड़ी है तो आप अपनी ओरिजिनल क्रीज लाइन को फॉलो कीजिए। हम ये गोल्डन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो ये प्रोमिनेंट लाइंस है दोनों साइड, इसे ब्लेंड करेंगे प्रॉपर्ली। सो फिर से ये शेड लेंगे। सो ब्लेंडिंग हो गई है, अब हम आईलाइनर यूज़ करेंगे। सो मैं ये फेसेस कैनेडा का पेन आईलाइनर यूज़ करूँगी। ये मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, बहुत अच्छा है एंड ये अराउंड 399 का ही है।
सो व्हाट आई डू इज़ मैं 30 तक काउंट करती हूँ ऐसे करने के बाद, तो मुझे प्रॉपर कर्ल मिलता है। जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ इट इज़ फ्रॉम लॉरियल लैश पैराडाइज। Now let's move on to our base. So first I'll be using Color Bar Primer. So what basically primer does is it builds a layer between your skin and your makeup. So for my base foundation I'll be using is MAC Studio Fix shade NC47. So use a damp sponge. So it's very lightweight, it has medium to full coverage, and I have a lot of marks on my face, so I prefer using this one. Instantly cover all your marks. For concealing I am using again LA Girl Pro Concealer shade Pure Beige. It has slight orange undertones, so it covers all the marks. PAC HD powder shade Banana. As I have oily skin I'll be powdering my whole face. आईब्रोज बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक है, सो मैं उससे ज़्यादा कुछ करती नहीं है, जिस यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, सो वही एक एरिया है जो मैं फिल करती हूँ, बाकी मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं अपने आईब्रोज के साथ। I'm using L'Oreal Paris Bro Artist Genius Kit. It is really nice. I'm using this since a long time. So it has powder as well as gel to set your brows. Next हम bronzer use करेंगे. This is from MAC Refined Gold. So मैं जब भी bronzer लगाती हूँ मैं हमेशा शेप फॉलो करती हूँ 3 का। सो बेसिकली आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉप यहाँ पे और नीचे। और मैं अपने फिंगर्स से ही नोज़ कंट्रोल कर देती हूँ, और मैं बेसिकली प्रोडक्ट फिंगर्स से अपने नोज़ पे लगा के कंट्रोलिंग ब्रश से कर देती हूँ। Let's move on to blush. I'll be using Miss Claire ka professional blusher palette. So this palette has so many colors. As you can see, we'll be using this one. Because I have a lot of open pores and acne scars, तो मैं बहुत कम blush लगाती हूँ, क्योंकि वो जो आपके पोर्स है उसे और ज़्यादा विजिबल करता है और पॉप आउट करता है, सो बेटर होता है कि ज़्यादा ना लगाओ। दिस इज़ हाइलाइटर। आई एम यूजिंग माई ग्लैम डुओ हाइलाइटर।
का शेड है एक्सोटिक, फर्स्ट वो यूज़ करूँगी। आफ्टर दिस Huda Beauty, so shade is Joyride. I'll be going over the shade. So we are almost done with our look. I'll be just doing lower lashes as well. Taking this shade. That's all. So we are almost done with our look. But I feel the lips are looking too pinkish. I want to put more of orange shade, so I'll be changing my lipstick now. Oh, this looks better. I'm using Kruade lip crayon caramel cupid. This looks way better. अब मैंने लिपस्टिक का शेड भी चेंज कर दिया है. Just one last step, which is I need to fix my makeup. So I'm using Swiss Beauty makeup fixer. So फिक्सिंग स्प्रे से आपका मेकअप इंटैक्ट हो जाएगा और आपका बेस मूव नहीं करेगा, भले कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो, इट विल बी देयर.